रंग लाल नीला हरा पीला काला ते अंत विच मुलायम महकदा सफेद। जिंदगी रंगां दी खेड है ते सारी कहानी जद रंगां दे रास विच डुब के कही जाती है तां शब्दां दी कमी दूर दूर तक महसूस नहीं हुंदी। शायद इस लई अर्पना कौर इस शताब्दी दी एक बहुत ही खास पेंटर ते म्यूरल आर्टिस्ट शब्दां दे नाल बड़ा ही सादा रिश्ता रखते हैं। पिछले हफ्ते दी साडी खास मेहमान पंजाबी लेखक अजीत कौर दी बेटी अर्पना बहुत हद तक अपनी कला विच रुझान दा सेहरा अपनी मां दे मत्थे रखते हैं। कैनवस ते इन्हां दी कहानियां इस झुकाव दा साथ दिंदियां नजर आउंदियां ने। पहाड़ी मिनिएचर्स, पंजाबी फोक लिटरेचर, फोक आर्ट मोटिव्स इन्हां दे काम च खुल के साह लैंदे ने। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग तो अर्पना ने जिंदगी दे सफर ते अपनी सोच ते सादगी नूं मिला के अपने अंदर दी कलाकारां नूं इस दुनिया दे सामने पेश कीता है। इन्हां दे रंगां विच निखरियां नानक, कबीर ते बुद्ध दियां कहानियां इन्हां दे अध्यात्मिक झुकाव नूं उभारदियां ने। भले ही इन्हां दे रंग दुनिया दे बहुत सारे कोनियां च विखरदे होण, पर अर्पना दिल्ली विच अपनी मां ते अपने पति नाल एक बहुत ही सादी, शांत ते सहज जिंदगी जी के अपने रंगां च लीन रहना पसंद करदे ने। इन्हां नाल खास मुलाकात पेश है बिटवीन अस। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ अर्पना जी। थैंक यू मैंने बुलाने वास्ते। अच्छा अजकल ऑफ कोर्स ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਲੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਫਰੰਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵਰਕ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? एक्चुअली ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ এনवायरमेंट वाली डे एंड नाइट टाइम वो चल रही है, और वापस जाके मैं एक हफ्ते बाद पेरिस भी जाना है लूव्र म्यूजियम में। देयर इज अ ग्रुप शो ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच आर्टिस्ट ते चंडीगढ़ ते आई नीड एनी एक्सक्यूज टू कम, क्योंकि मैंने शहर बड़ा सोहना लगता है। एनी एक्सक्यूज ते देयर इज नो डे टाइम व्हेन आई कम टू चंडीगढ़ कि मैं लेक ते वॉक ना करा, और बोटिंग भी की in spite of being so busy, and rock garden and the museums, क्योंकि चंडीगढ़ एक शहर है जेड़ा इन्हें दरख्तां नाल भरिया होया कि डॉक्टर रंधावा दी देन है, जेड़ा कॉर्बुसियर दी देन है। इट्स अ सिटी ऑफ इट्स काइंड। आई लव कमिंग हियर। अच्छा जिवें हुणे तुसीं गल कर रहे सीगे कि तुहाडी सीरीज चल रही है एनवायरमेंट, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਦੇ ਰਾਇਟਸ, 1984 ਫਿਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ, 70s ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਬਲੀਡਸ ਟੂ ਮਚ ਫॉर ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, और इन्ने मॉनसून विच मतलब बाहर एक्सपोज्ड और सर्दियां विच। सो कल मैं चंडीगढ़ म्यूजियम में अपनी 30 साल पुरानी पेंटिंग देखी कॉल्ड शेल्टर्ड वुमन, 30 साल बाद देखी, जेडी डॉक्टर एमएस रंधावा ने खरीदी सी 5000 दी 5 फुट दी पेंटिंग। मैं 30 साल बाद देखी ते ओदे विच कि एक औरत कोल अम्ब्रेला हैगा ते बाकी अनशेल्टर्ड ने। इट्स वन अगेंस्ट मैनी कि देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज व्हिच हैज facilities and the rest are all unsheltered. That was done 30 years ago. नौकरानी सीरीज थे फैज साहब ने 8 पेंटिंगां छापियां भी सी, फैज अहमद फैज ने। He was editing a magazine called Lotus from Beirut in exile, and I was very honored that he published 8 paintings. In fact 15 दिन पहले I was with his daughter in Amritsar. उत्थे भी मैंने कोई बाना चाहिए जान दा कि मैं मत्था टेक लिए। उत्थे आर्ट कॉलेज एक सेमिनार सी, so Salima Hashmi and I were invited to speak on our work. That was there just 15 days back. अच्छा हुने themes ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ throughout, you know, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ of course you've had themes like Nanak, Kabir ji, Buddha, and ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ subjects ਰਹੇ ਨੇ, environment, using Sita as a metaphor, you know. All these years, down the years, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ painting ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ since when you began at the age of 9, ਤੇ themes ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ pattern ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ change ਜਾਂ evolution and style of painting ਚ ਵੀ ਕੀ change ਆਈ ਹੈ? I think you've asked a very meaningful question which very few people would ask, you know, and it's a very deep question that you asked. ਜਿਹੜਾ patterns ਨੇ work ਤੇ earlier
I used to have very direct, you know, communication, and I used to crowd my canvases. बहुत सारे figures एक canvas ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ खाली wide open spaces ਨਾਲ बड़ा प्यार है. So I leave lot of space in my canvas. And secondly, last few years I have an addiction for black color. क्योंकि जिस तरह नानक साहब ਨੂੰ पेंट करो, it's a bit unconventional कि नानक साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ black background ਵਿੱਚ पेंट कर रहे हो, पर जिस तरह हनेरे ਵਿੱਚ दिया जलाओ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਲਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. So colors stand out against black background, like the yellows, blues, you know, they glow against black background. अच्छा, तुसी of course ਤੁਹਾਡੀ mother, I think being an artist herself, she's a writer. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? You know, I was exposed to different forms like writing and music, sitar, dance, the usual. But I used to get maximum just ekdam meditative stillness, you know, only from painting. So I stuck to that. Our pehla oil on canvas was at the age of 9. It was inspired by Amrita Shergill's mother and daughter. From Hill Women. Then this maid servant series, as I told you, was there. And then there was a series called Missing Audience, which was done around 1980-81, because कोई audience नहीं सी art दी. And दिल्ली में क्योंकि दो ही गैलरियां सी, it was known as a bureaucratic Babu city. There were no buyers for art except floating diplomatic population. सारे दिल्ली दे artists मद्रास दे और कैलकटा दे used to go to Bombay to show, especially Jahangir Art Gallery. ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ Parsi community was very welcoming. I wish ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ Parsi community which na culture see to receive art. And all the Godreges, Dubashes, Nicholsons, सारे बड़े avid collectors see. And in 80, for the first time experience, 30 साल पहले दी गल है, I came back empty-handed. वो जो मेरी missing audience series, suddenly I had a huge audience. I had a huge press, and I had a huge audience, and that was the first taste of. And then I went back in 82 with another series. But then came 84 and the massacre. And I did this series World Goes On. Jari Al-Qazi Sahab ne dikhai si 85 in Delhi. Then it travelled to the Godreges Gallery in 85 in Bombay. Then it went to Calcutta. Ode koi takers nahi si, because it was a lot of death and tragedy. And I found it very difficult to deal. I'd never seen death on such a massive scale. Kyunki we were driving through those mobs, you know, to the relief camps every day, Mummy and I. So I thought painting was impossible after that. But oh, catharsis chaida si. So this series came out of that catharsis. World Goes On. So painting has been a healer for you in many ways. I think it's art forms are healers for everybody. They are healing. And it's not you who's creating. The art creates you. Because every day, believe me, you're a new person. Every day is like your birthday. Every day is like you're 16 years old. Every day. I know I'll be in my studio tomorrow. Aaj raat hi pahunchna hai Delhi. I know that, you know, I'm longing to be 16 tomorrow. So I'll be 16. अच्छा, before we take a break, मैं एक सवाल पूछना सीखा कि अमृता शेरगिल, in fact ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅਰਪਨਾ ਰੱਖਿਆ, but before that ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. You felt, in fact you've said ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ soulmate ਲੱਗਦੀ ਹੈ. What is it about Amrita Shergill ke? Firstly, she was, you know, from Punjab. You can say she was a daughter of Punjab. And my mother, she didn't, being a writer and a very rebellious writer, उन्होंने कहा कि मैं ना अपने आप चुनना, अपना मजहबी खुद चुनना when you are able to. और मैं सिमलीज पढ़ रही थी, so school leaving certificate पढ़ना होता है at the age of 15. फिर मेरी principal ने क्या, you'll have to keep a proper name. And the first name I thought was Amrita. Then I said, everybody laugh at me, apne amnu ki samajhdi hai Amrita Shergill. Then I thought of Arpana. And I मम्मी नु पोस्टकार्ड पाया कि अमृता और अर्पणा,
उन्होंने कहा तू जो मर्जी रख, राबिया रख, मेरी रख, मैंने कुछ नहीं फर्क पैंदा. So it's the only case I know. I don't know whether you've heard of such a case where somebody keeps their own name. No, very rare. So I was in Simla, she was in Delhi, kept my own name. फिर मैंने मुल्क राजा नंद अंकल कहते होंदे सी कि ये अर्पणा नाल कौर नहीं जांदा. मैं क्या अंकल, I mean it goes very beautifully, you know, the word Arpan. So that's how. ना जी, process of painting, of course ये ऐसा शुरुआत हुई. अमृता शेरगिल ना तो बहुत ज़्यादा एक some sort of a bond you have felt. The other bond I felt is with the miniatures of the Punjab Hills. It's been a very strong bond since I was 15, 16. Yesterday I was in the museum. Dr. Randhawa ने अपनी सारी collection museum ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है. Drinking them in. मैं विचू seminar विचू पढ़ के miniature collection, I do it every time, as I said, you know. ते जोड़े Punjab Hill दे miniatures ने, I've got lot of forms and colors from them. Then when I did the 84 series, it was too tragic for me to deal with death. So I set the human tragedy in the vast backdrop of nature. कि भाई world goes on, nature goes on, the rivers flow, the trees bloom, clouds float. Those सारे natural elements are from the Punjab Hill miniatures. I couldn't afford the miniatures 30-40 years ago, so I would just buy the books. और किताबां भी बड़ियां महंगियां होंदियां मिनिएचर्स दियां ते मेरी कोई पेंटिंग विकनी ते मैं पहले ही ना किताब देखी हुंदी सी कि मैं किताब खरीदनी है मिनिएचर्स दी. You are one of the biggest artists of India and ਤੁਹਾਡੀ पेंटिंग्स काफी अच्छे प्राइस पे ਜਾਂਦੀ है. I'm embarrassed by my prices. Really? No. You didn't expect them to be so high? No, never. I think it started with Hiroshima Museum putting a price of 7 lakhs on your painting when you were commissioned by them. Yes, that's right. That was way back in 94. Because ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ in the memory of the dead. And I never knew that I'll get a letter. Actually, work had gone to Japan through National Gallery. Through group shows. It was written about in few Japanese papers. This is in the 80s. So 94, Mr. Arpana Caur gets a letter कि we are commissioning 10 artists all over the world and we are sorry we are paying very little. For one painting we'll only pay 7 lakhs, you know. And the rest of the 9 were very, very famous male artists like Anthony Green from England, Nimjun Paink, Sam Francis who was American. So they assumed that 10th name is also a man. But when I went there, the cat was out of the bag. You were the only woman painter there. So I did a big triptych called Where Are All the Flowers Gone. ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ this used to be an anti-Vietnam war song. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ But I'll tell you one secret also about pricing. You know, मैंने पता चंडीगढ़ एक बड़े सोने म्यूजियम ने they somehow have no money for art. So 1980 Dr. Randhawa ने painting खरीदी for one of the museums. Dr. Goswami bought for the other museum, which is the Corbusier wala museum. It's one of the most beautiful museums I've seen. And that was in 1986. Then when I brought the Sony Mahiwal show here, सारिया ने क्या चंडीगढ़ ते आर्ट बिल्कुल नहीं विकना. मैं क्या नहीं, once in a lifetime I have to do a solo here. So at the sector 9-inch gallery से 10-12 साल पहले I brought the Sony Mahiwal show here. I knew nothing in sell, but my only plea was VN Singh director होंदे सी. मैं उन्हां नू क्या whatever you offer, I want a painting in the museum. There was no reply. I kept writing letters, no reply. आज तक मैं चिट्ठियां लिखनियां to the current director. आज तक मैंने कोई जवाब